Our story begins in Delhi. In 2017, a video of a young boy named Kamlesh popped up on the internet and it took the world by a shock. The video showed a young boy of 13 addicted to drugs and a weird chemical named solution. It was actually paint thinner. Take a look at this video. नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाला? भोपाल। कितनी उम्र कितनी है बेटा तेरी? हमारी 13 साल। चरस पीता हूँ, एफएम पीता हूँ, स्नैक पीता हूँ, स्लोचन पीता हूँ। This video might look innocent, but it hides the sinister reality of drug and alcohol abuse by the youth in India. According to the UN Drug Report 2020, in India, approximately 1 to 3% of the people are dependent on drugs. Drugs are most prevalent in Punjab and Northeast. Average drug consumption in Punjab is 3 times the country's average, and it leads to almost 30 to 40 deaths per month. The widespread drug abuse in India is because of few reasons. First, India is very close to two of the world's biggest opium producing regions, the Golden Crescent and Golden Triangle, which makes the drug production very cheap, and the tunnels on our borders and weak border policing makes the transport of drugs easier. Second, India's weak pharmaceutical laws make it easier for drugs to be sold easily. And many drugs with medicinal purposes are abused by addicts, and these drugs are sold by the chemist without a prescription. Third, the poverty in many places leave these people homeless, and then they are trapped in this vicious cycle of drug abuse. We can see these homeless drug addicts all around our cities. If you want to know how strong this addiction is, here is a clip from Kamlesh's interview. दिल नहीं करता वापस मम्मी के पास जाने का? नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी जो नहीं पीन देती ना। मम्मी से बढ़कर है ये? हाँ। सबसे बढ़कर है? सबसे। The current state of drug abuse in India is pretty bad, and it does not seem to get any better as time passes. Currently, drug-related crime rates are increasing rapidly. These crimes involve robbery, theft, murder, and even rape. Most of these crimes are committed when the criminals are intoxicated, and they are mostly done to get money for more drugs. Drug-related suicide rates have also risen in India. 10 suicides are seen every day related to drug abuse. Most of these suicides remain unreported, as families tend to change the cause of suicide due to societal pressure. The treatment of these drug addicts is almost impossible, as most of these rehabilitation centers do not function, and most of the doctors are not capable of treating patients like these. To solve this problem, we need to take the following measures. First, we need to tighten our border security to break the supply of drugs. This can be done by increasing surveillance, employing more border patrol, and making stricter laws to prevent drug trafficking. Second, drugs are prevalent because of poverty and unemployment. So to change this, the government needs to impart economic development schemes and decrease unemployment so that the poverty of the region is lowered. Third, we need to adapt sensitive treatment measures and improve our medical infrastructure to support these addicts to overcome their addiction. A study shows that only 1 out of 5 people who try to quit get proper medical attention. We need to increase hospitals and doctors that can provide drug substitution therapy in order to get a chance. Drug addiction is a curse to society, but it can be treated. If you find anyone suffering from drug addiction, kindly call 1800-11-0031 to get help. This curse can be treated with proper and professional care. A warm welcome to everyone.
My name is Sneha Verma and I am here representing my Nigrita house along with Saksham, Shagun, Prasun and Vedansh. We are going to present a photo shoot on the topic Women Empowerment. आजकल महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने बहुत सी तरक्की की है। आज भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है। कुछ जगह आज भी महिलाएं रात में घर से बाहर जाने से घबराती हैं। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति आर्थिक रूप, व्यवहारिक रूप और सामाजिक रूप से बहुत खराब थी। प्राचीन काल में उनको देवियों का दर्जा देने के बावजूद भी उनकी हालत राजा महाराजाओं की दासियों के समान थी। इन संघर्षों और आंदोलनों की वजह से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे देश का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी ने महिलाओं के लिए व्यवसाय के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। अब वे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा दूसरी केंद्रीय व राज्य स्तरीय सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। टेलीफोन, लिपिक कंप्यूटर, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा में महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ महान महिलाओं ने इस देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वह सीता बन बेटों को लवकुश बना सकती है। अरे कमज़ोरी से मत नापना इनकी ताकत को। जिस हाथ में चूड़ियाँ पहनती है ना, उससे तलवार भी चला सकती है। The representative of Penumbra House are going to present importance of trees while showing a video on save trees during photo shoot competition which is held during Angels Fest. Other team members of Penumbra House are Arnav Verma from 6th Goose, Yuvansh Khatiyar from 6th Woodpeckers, Anushka Sharma from 6th Orions, Shashank Chaudhary from 7th Woodpeckers and me Chirag from 10th Woodpeckers. Hope you will enjoy the video. मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी।
दुखता है, हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे, दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे, दुखता है, ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है। Trees are also in pain now. We all have witnessed our carelessness towards trees. We had misuse in past. So now we should take a pledge for our bright future and healthy living to plants. At least one tree by each one of us. So all of you sing with me. नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाएं। एक पौधा आज हम भी लगाएं, एक पौधा आज हम भी लगाएं, एक पौधा आज हम भी लगाएं, एक पौधा आज हम भी लगाएं। So, at the end, promise that we will take care of our natural resources because God has created all this. One, we should keep it as a blessing. Thank you.